Assalamu alaikum everyone. Let's move down to the next part of electrochemistry where we will discuss about batteries, right? Different types of batteries are there that will be discussed over here. Now, in daily life, we use different type of devices where the common source what we use the AC source. If the AC source is not there, many of the electronic devices they run on cells, or if the power is off we have the inverters now, right? So these cells which are used in torches or wall clocks or even in the small toys, button shaped cells are used, or in laser lights. So those button shaped cells or those pencil cells, or what we call like everyday cell or duracell, these are all nothing but the electrochemical cells where we convert the chemical energy into electrical energy. So that part we are going to discuss over here, right? So here, first of all, what do you mean by battery? Usually, single electrochemical cell is also called as a battery, but when you require some higher output or potential, that time we combine two or more electrochemical cells. So, combination of two or more electrochemical cells connected in series is called as a battery. What is battery? Combination of two or more electrochemical cells connected in series is called battery. Now we have discussed about the Daniel cell where we use zinc rod dipped in zinc sulfate solution, copper rod dipped in copper sulfate solution. We connect them by metallic wire and salt bridge, right? So that setup requires too much of space. It will not be easy to handle, right? Even though you are getting some output of EMF of around 1.1 volt, but then also to handle that apparatus it will be quite difficult. So whenever you call a battery or whenever you are using a battery for commercial or practical purpose, that time few conditions has to be fulfilled. That is, battery should be lightweight, so that it should be portable, means it should be easily carried from one place to another place, and it should be compact, means it should not occupy much space, राइट. लाइट वेट होना ज़रूरी है और कॉम्पैक्ट, जितना स्पेस कम हो सके, जितना भी आप जो है उसको स्मॉल फॉर्म में कर शॉर्ट स्मॉलर साइज में चेंज कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, बना देना है ताकि वो लाइट वेट भी रहना है और ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करना है. That is the main important requirement for a battery to be used for commercial purpose or practical purpose. Like we see in the trains and all, huge batteries will be located at the bottom part, right? Till now advancements are there in the production of these batteries. They are making lightweight, means earlier metallic batteries were there, right now they are using polymer batteries, right? Bakelite material or thermosetting polymer will be used in the construction or the preparation of those type of batteries, right? तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो लाइट वेट होना ज़रूरी है और कॉम्पैक्ट, स्मॉलर से स्मॉलर जितना भी साइज हो सके उसको बनाना है. एंड द अदर इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज ड्रॉप इन वोल्टेज इन द सेल्स व्हेन पुट इन यूज must be steady and not sudden, right? So whenever you are using a battery for running some device, all of a sudden the voltage will drop out, the battery becomes dead. That it means that the battery is of no use now. So such batteries should not be there. So batteries should be in such a way that whatever chemical energy is converted into electrical energy, whatever electrical energy you get there, it should be steady, means it should be produced continuously and it should decrease down very slowly. Naturally the electrical power will be reducing because the chemical reaction will be finishing off slowly, but that should not end up immediately, राइट. अब जैसे कि हम देखते हैं वॉल क्लॉक्स में हम पेंसिल सेल वगैरह यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ ए सडन बंद नहीं होते, स्लो स्लो होके 5 मिनट 10 मिनट पीछे पीछे होके ऑल ऑफ ए सडन जो है कभी थोड़े दिन के बाद जो है वो स्टॉप हो जाता है, राइट. और कुछ ऐसे भी ऑर्डनरी सेल्स ऐसे रहते हैं कि इमीडिएटली, जैसे कि ट्रांजिस्टर या रेडियोज में वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑल ऑफ ए सडन ही बंद हो जाते हैं. वो एक ऑर्डनरी टाइप के होते हैं. स्टैंडर्ड बैटरीज में कैसा होना है, वोल्टेज ड्रॉप स्लोली रहना है. इट विल ड्रॉप आउट डेफिनेटली, बट इट शुड बी ड्रॉपिंग डाउन वेरी स्लोली एंड इट शुड नॉट बी सडन. तो ये कंडीशंस रहने के बाद ही आप जो एक बैटरी कमर्शियल और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, राइट. नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस two important types of batteries, that is primary batteries और primary cells. बैटरीज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं,
एक होता है प्राइमरी सेल्स और प्राइमरी बैटरीज, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल्स और सेकेंडरी बैटरीज. See what do you mean by this primary batteries or cells? These are the cells which cannot be recharged by passage of electricity. Right? Primary cells are those cells, those batteries which cannot be recharged by passage of electricity. ये ऐसे डिवाइसेस हैं, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसको आप रिचार्ज नहीं कर पाएंगे. राइट? अब जैसे कि हम मोबाइल बैटरी हैं, आप जैसे ही बैटरी लो हो जाती है आप चार्जर कनेक्ट करके उसको रिचार्ज करते हैं. ओके, तो वो सेकेंडरी कैटेगरी में आता है. वही आप वॉल क्लॉक के सेल्स हैं या कोई टॉयज के सेल्स है, एवरीडी सेल या ड्यूरा सेल, ये कैसे हैं, एक ही टाइम वन टाइम यूज रहते हैं. यू कैन नॉट यूज देम अगेन एंड अगेन. वंस द सेल रिएक्शन इज फिनिश्ड, it is dead now, it has to be thrown out, it should be disposed, it cannot be recharged again. Right? Such batteries we call them as primary batteries or primary cells. Commonly हम wall clocks में ये यूज करते हैं, या फिर कोई लैम्प्स, ओके, स्मॉलर लैम्प्स में यूज करते हैं, या फिर स्मॉल टॉयज में जो है ये पेंसिल सेल या एवरेडी सेल यूज करते हैं. ये पूरे क्या है, प्राइमरी बैटरीज है. राइट? सो इन दीज सेल्स व्हाट हैपेंस, सेल रिएक्शन अकर्स ओनली वंस and it cannot be reversed by passing electricity. Means it only functions in one manner, that is chemical energy is only one time converted into electrical energy. Again you pass electricity and you cannot make it into chemical energy, right? So interconversion is not possible, it is taking place only once. They become dead over a period of time after single use. Right? So examples are Leclanche cell, which we commonly call it as dry cell, and the other is mercury cell. Leclanche cell या dry cell यानी कि पेंसिल सेल जो एवरेडी सेल आता है उसको हम Leclanche cell या dry cell बोलते हैं. mercury cell ये बटन शेप सेल्स होते हैं जो स्मॉलर टॉयज में या लेजर लाइट्स में वगैरह हम यूज करते हैं, या फिर हियरिंग एड्स, ब्लूटूथ या फिर हियरिंग एड जिसको कान को सुनने कम आता है, वो हियरिंग एड डिवाइस जो यूज करते हैं वो भी जो है बटन शेप फॉर्म में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं मर्क्यूरी सेल. राइट? सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द Leclanche cell, how the reaction takes place, and next we will go with mercury cell. So this is the Leclanche cell diagram. Okay, different industries will be making in different manner, लेकिन ये एक basic diagram है. Here we can see outer part we call it as zinc cup because it will be made up of zinc. In that you will be using a mixture of manganese dioxide and carbon black along with ammonium chloride paste. And inner part again you will be having carbon rod which will be acting as cathode, or you can use graphite also. Right? तो ये भी वही स्ट्रक्चर है. सिंपल एग्जाम में पूछे भी तो इस तरह का सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, इतना 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं. यू नीड टू ड्रॉ लाइक दिस. राइट? So outer part we call it as zinc container or zinc cylinder which acts as anode, and after that you will be having a mixture of manganese dioxide and carbon, then paste of ammonium chloride, and we use sometimes zinc chloride also. Then cathode will be nothing but this carbon rod, it will be a positive electrode, and outside it again it will be surrounded by this mixture, manganese dioxide plus carbon. Right? So here zinc acts as anode and copper rod it will act as cathode. At zinc oxidation takes place, whereas at cathode reduction takes place. Let's see how the cell reactions takes place over here. Cell reactions are too much complex, but in simple manner it can be mentioned like this. So very important part, for 2 marks they can ask in the examination, write the anodic and cathodic reaction taking place in Leclanche cell. तो आपको ये दोनों एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन लिखना रहता है. एनोड के पास क्या होता है, जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन, दैट इज Zn changes to Zn2 plus by the loss of 2 electrons. At cathode we are having manganese dioxide along with carbon black and ammonium chloride paste. Right? So here what happens is this manganese dioxide, where manganese is having +4 as its oxidation number, it undergoes reduction to form
manganese oxide hydroxide, or finally it will change into manganese oxide, where its oxidation number from +4 changes to +3. यहाँ पे 0 से +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे +4 से +3 रिडक्शन हो गया, राइट. सो अमोनियम आयन from the ammonium chloride combines with the manganese dioxide, accepts the electron from the anode and becomes manganese oxide hydroxide, and it produces ammonia. We think that ammonium ion is undergoing reduction, but it is not so. Only the charge has changed. Ammonium ion is changing into ammonia, whereas actually oxidation in reduction manganese is taking part, right. So here 2 electrons are lost, whereas in reduction we are showing only 1 electron. So second equation is multiplied by 2. जब आप 2 से multiply करेंगे, 2 electron, this 2 electron will cancel. When you add up the equations, you will get zinc plus 2NH4 plus 2MnO2 gives Zn2 plus 2MnOH plus 2NH3, right. And finally this hydroxide compound will change into oxide form, producing water, right. So this is the simple form or simple reactions or simplified reactions, we can say, taking place in Leclanche cell, right. Now this Leclanche cell, if you talk about its output, it will be producing a potential of around 1.5 volt. Okay. Now once, the drawback of this cell is here zinc ion which is formed, it will be combining with ammonium ion to form a complex compound, and finally it will combine with the negative ions and form a complex compound, due to which what happens is, first of all, this compound again cannot be converted into zinc and ammonia form or ammonium form. So as it is forming a complex, cell reaction cannot be reversed, that's why it cannot be recharged. पहले तो ये point हो गया. दूसरा, यहाँ पे जो 1.5 वोल्टेज कंसिस्टेंट नहीं रहता है, it won't be consistent because the compounds produced, the products formed they are available in aqueous form, right. Whenever the products are in aqueous form, their concentration will change. So due to that reason, this voltage will be not consistent, it will be fluctuating, कम ज़्यादा होते रहता है, right. Finally it will drop down to 0. So two demerits of this thing is, it cannot be recharged. Why it cannot be recharged is, you are getting a complex compound where it cannot be reverted back. Cell reaction cannot be reversed. Second thing, it will not produce a consistent output during the course of the reaction because the products formed are in aqueous form. They are not purely solid or purely liquid because they are obtained, some of them are obtained in aqueous form. That's why it will not produce a consistent voltage, right. So that's why wherever required, wherever it can be used conveniently, we use it. Otherwise, where you require a consistent output, we use mercury cells. जहाँ पे भी consistent voltage चाहिए, वहाँ पे हम क्या है, mercury cells का यूज़ करते हैं. कभी कभार आपने देखा होगा बैटरीज वॉल क्लॉक्स के एकदम डाउन हो जाते हैं, वॉल क्लॉक टाइमिंग स्लो होते रहता है, जब आप या फिर रेडियोज़ में या फिर ट्रांजिस्टर्स में जब यूज़ करते हैं तो वॉइस क्लियर नहीं आती है. इसका मतलब होता है कि वोल्टेज ड्रॉप हो गया या फिर ऑलमोस्ट बैटरी डेड हो गई. सो सम ऑफ अस व्हाट दे डू इज दे कीप दैट सेल्स एट द टॉप ऑफ द रूफ, यानी कि धूप से जो है गर्म होने के बाद थोड़ा रिचार्ज हो जाते हैं बोल के हम समझते हैं. इट इज़ नॉट एट ऑल सो. धूप में रखने के बाद रिचार्ज होना ये गलत है. एक्चुअली क्या होता है, धूप में रखने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस सेल के अंदर जो भी अनरिएक्टेड कंपाउंड्स हैं वो थोड़ा रिएक्ट होके और थोड़ा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स ऑल. यानी कि रिएक्शन 100% नॉर्मल टेम्परेचर्स पे ख़त्म नहीं होता है. उसको क्या करते हैं हम, थोड़ा हीट डायरेक्टली भी नहीं करते हैं, हीट करने जाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, राइट. तो धूप में रख के ऐसा
उसको रिचार्ज होता है हम समझते हैं, लेकिन एक्चुअली फैक्ट वैसा नहीं है. When you keep it at the roof, on the roof, where the temperature will increase, due to increase in temperature, speed of the reaction also increases. So whatever unreacted reactants are there, they will react and form the products. You will get again some more output. Finally it will become totally dead, right? So this is Leclanche cell, which is belonging to primary cells, and it cannot be recharged by passage of electricity. Okay, next, when you talk about mercury cell, mercury cells, the button shaped cells. Okay, here we use again zinc container as anode, outer covering, and carbon rod as cathode, which is present inside. Here you can see, and in between these two, we will be using a paste of mercury oxide and KOH solution. Electrolyte of KOH along with mercury oxide, it will be taken in the form of a paste and it will be placed inside the container, right? So यहाँ पे alkaline medium आ रहा है, that is KOH is there. Potassium hydroxide will be used as a electrolyte along with HGO. Let's see how the cell reaction takes place here. Here again zinc acts as anode, where it undergoes oxidation, where what happens in alkaline medium, zinc Zn changes to ZnO. Okay, उसको हम इस तरह लिखेंगे, zinc is changing into zinc oxide, right? बैलेंसिंग कैसा करेंगे, अल्कलाइन मीडियम है, जहां पे ऑक्सीजन होता है वहीं पे आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, और अपोजिट साइड में हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड करना है. दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे भी आप 2OH माइनस लिख दो, राइट? एंड zinc has changed from Zn to ZnO, means it is having +2 charge here, so it has lost 2 electrons. So at cathode what happens, those 2 electrons will come. At cathode we are having paste of mercury oxide and KOH. KOH is acting as a medium, so HGO, it changes to Hg. It will become mercury from its oxide form, and here one oxygen is there, here no oxygen, so I'll write here H2O, and here I have to write 2OH minus. 2 electrons are lost at anode, so those 2 electrons will be gained at cathode. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल भी कैंसल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास जिंक सॉलिड, HgO सॉलिड, ZnO सॉलिड एंड मर्क्यूरी लिक्विड, राइट? मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं प्योरली सॉलिड और प्योरली लिक्विड फॉर्म में, एक्वियस फॉर्म में कोई भी नहीं है. इस वजह से इस मर्क्यूरी सेल से कॉमनली 1.35 वोल्ट का आउटपुट मिलता है और ये कंसिस्टेंट रहता है. It is having one merit over Leclanche cell is it produces consistent output throughout its lifetime, right? So mercury cells have the ability of providing consistent voltage throughout their lifetime because products are obtained in solid or liquid form. They are not available in aqueous form, right? or ionic form. आयोनिक फॉर्म में कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता, जैसे कि लिक्लान सेल में आयोनिक फॉर्म में प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको आयोनिक फॉर्म में कोई कंपाउंड प्रोडक्ट नहीं मिलता है. इस वजह से आपको जो भी आउटपुट मिलेगा कंसिस्टेंट मिलेगा. इट विल बी देयर थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम, यानी कि ऑल ऑफ ए सडन जितना भी रिएक्शन है पूरा खत्म होने के बाद ही बैटरी जीरो हो जाएगी, राइट? स्लोली इट विल नॉट कम डाउन. whatever cell reaction reactants are there, they will completely react and it will come down to zero, means throughout its lifetime it produces consistent output, right? So these are the two examples for primary cells, that is Leclanche and mercury cell. दोनों में से कोई एक एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. कॉमनली क्वेश्चन जो आता है, राइट द कैथोडिक एंड एनोडिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन Leclanche cell और इन mercury cell. तो करेक्ट वे में या एनोडिक रिएक्शन और आपको कैथोडिक रिएक्शन लिखना है, एंड यू कैन ऑल्सो राइट दिस ओवरऑल रिएक्शन. दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. Okay, in next session we'll go with secondary batteries or secondary cells. Okay.